in this class of Evidence Act. We are going on with the overview of Evidence Act. As we all know that evidence is a very, very important matter for all judicial examinations because Evidence Act mostly deals with all the aspects of evidence which is adduced during the course of a trial, whether in civil law or in criminal law. And that is the reason why Evidence Act is one of the most important acts to be mastered for anybody who is aspiring to be a judge. Now, before I start with today's lecture, just a few words about Unacademy. Unacademy has, in a very short time, become one of the leading names for judicial aspirants to crack judicial examinations. I've been teaching in Unacademy for almost now 8 months, more than 8 months, little more than 8 months now. And I can vouch that probably Unacademy is one of the best academies, and that too online, where you get the advantage that you can get uh, recorded lectures, so you can hear the recordings later on, and plus you have the advantage of attending it live. So both the advantages are there under one roof. And the icing on the cake is that it is most modestly priced at about 36, 37,000 for a year. Probably this is one of the cheapest modes available for a judicial aspirant to crack judiciary. Good evening, Ashival. Now, good evening, Devrata. Good evening, MK Malik. Now, one thing we must always remember, as I was just saying this thing, that anybody who wants to crack judiciary has to master every word, every concept, every aspect of Indian Evidence Act. In my previous lectures, we were taking an overview in which I discussed the basic three cardinal philosophies which govern the entire Evidence Act. Good evening, Priyanka. In that, we discussed that the three cardinal philosophies which govern the Indian Evidence Act are firstly, the best evidence rule. We discussed the best evidence rule and we distinguished it from the best rule of evidence, which is a different thing. Best evidence rule basically is important because a judgment is going to be based on evidences. If the evidences are not good, the judgment cannot be good. It is a raw material for a judgment. That is why we ensure that the best possible evidence goes to the court. And for that matter, we have this aspect of the best evidence rule as a golden thread throughout Indian Evidence Act. We discussed this in detail, and students who missed my previous lecture, please go to my previous lecture. We have discussed this in great detail. The best evidence rule can be divided into two parts. Firstly, the qualitative part, where evidence must be weighed and not counted. Good evening, Jamshed. And second aspect we saw was comparative analysis. Comparison, for example, documentary evidence is preferable over oral evidence. And when we went to intra, that means if we go to documentary evidence, then primary evidence is better than secondary evidence. And when we go to oral evidence, well, the direct evidence is always better than hearsay evidence. We discussed all these aspects in my previous lecture. The second cardinal philosophy of Indian Evidence Act is the the relevancy, the need for relevancy. So we discussed this also, that there are two types of relevancies. One is a logical relevancy, which is based on logic, and the other is what is laid down by Indian Evidence Act. Now, please remember, when we go to the definition of the word relevant, it says only those things, those facts are relevant which are made relevant by this law. In other words, only those facts which are allowed to be made relevant are allowed by Indian Evidence Act. So relevancy depends on legal relevancy and not on logical relevancy as far as Indian Evidence Act is concerned. We discussed this aspect also in my previous lecture. And the third aspect, which was a very important matter, was appreciation of evidence. Now, once we are putting up evidence, now relevancy is different, but now, how will the judge appreciate it? Under what circumstances will appreciation take place is the third matter.
And that aspect we've also discussed. So please remember the three cardinal philosophies are the best evidence rule, secondly, the need for relevancy, and thirdly, the appreciation of evidence by the judge. Now, we had given this was just a complete bird's eye view of the cardinal philosophies which govern the Indian Evidence Act. Good evening, Ajit. We go on to a very important matter. Today I'm going to talk about the jurisdiction of Indian Evidence Act. इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल एंड आई हैव नोटिस दैट इंटरव्यू में तो बहुत ही बार क्वेश्चन इन चीजों पे पूछा जा रहा है व्हेन आई से द jurisdiction, सो सेक्शन 1 हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का डील्स विद jurisdiction. जब भी हम किसी चीज की jurisdiction की बात करते हैं, jurisdictions can be many. For example, CPC में अगर हम जाएं तो jurisdiction can be firstly territorial jurisdiction. Good evening, Joydeep. Secondly, CPC में जब हम जाते हैं pecuniary jurisdiction, subject matter jurisdiction वगैरह. हम CPC नहीं पढ़ रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं एविडेंस एक्ट. तो एविडेंस एक्ट का jurisdiction क्या है? Now please remember, जैसा कि मैंने बोला, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है. Now, jurisdiction of evidence हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, territorial jurisdiction and subject matter jurisdiction. So we are going to discuss this whole topic of jurisdiction into two parts. Priyanka, pecuniary का evidence act में नहीं लेना देना. We are now pecuniary का section 6 CPC में आता है. Okay. Now this, please remember, as I told you, this question is very important. Good evening, Pooja. So when we discuss the jurisdiction, as far as the territorial jurisdiction is concerned, it extends to the whole of India. जब मैं सेक्शन 1 में जाता हूं तो it extends to the whole of India. पहले जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, बट आफ्टर द 2019 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अब इंडियन एविडेंस एक्ट जम्मू कश्मीर में लगता है. It applies to whole of India. Yes, now it includes Jammu and Kashmir. Absolutely. Now, no, except some bare acts में अभी बात करूंगा. Good evening, Nazar. Now, this aspect we must remember that now Indian Evidence Act is applicable all over India, to the whole of India. This is the territorial jurisdiction. When I go to the subject matter jurisdiction, now let's pay attention because इन पे अलग-अलग questions आ रहे हैं. See, basically, अगर हम देखें subject matter jurisdiction, I will divide the subject matter jurisdiction of Indian Evidence Act into two parts, positive and negative. कहाँ applicable है और कहाँ applicable नहीं है. So subject matter jurisdiction I can divide into two parts. A, where is it applicable? And B, where is it not applicable? Both the things have been given in section 1. First, let us see where it is applicable and applies to all judicial proceedings in or before the court, before any court. Let's stop here. Now, these are two very important words which we have just read. Now, before I go on and discuss these words, first let me give you some important facts about Indian Evidence Act. Please remember that Indian Evidence Act बना, उसके अंदर बहुत कम चेंजेस हुए. 2 लॉ कमीशंस इसके ऊपर बैठाई गई to overall the Indian Evidence Act. The 5th Law Commission of 1977, it made a comprehensive revision of Indian Evidence Act. However, not much was changed. ज्यादातर चेंजेस क्या आए? जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आया बाय द आईटी एक्ट 2000, वो चेंजेस हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट के रूप में आए. बट जो हमारा दूसरा लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 2002 की, दैट इज द 185th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन. Now that has recommended very important changes. Unfortunately, as I said, most of the changes have not come in the Indian Evidence Act, but we must keep this in mind because in one of the prelims I saw this question: which of the law commissions have recommended sweeping changes in the Indian Evidence Act? Well, it is the 185th Law Commission. Also, let me tell you, interestingly, that the Indian Evidence Act
which is here, which we 1872 वाला जो हमारे पास है, same was taken up by Pakistan. But in 1981 इन्होंने उसको ओवरऑलिंग किया, वही है एक्चुअली, उल्टा पुल्टा है थोड़ा सा, बट नॉट मच चेंजेस. एंड नाउ दे एक्चुअली हैड 1984, सॉरी 1984 में एविडेंस ऑर्डर एक्ट है उनका, और उसके बाद बना ये कानून शहादत. सो बेसिकली जब हम पाकिस्तान में या इंडिया में देखते हैं तो एविडेंस एक्ट हमारा ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा फर्क है कि द अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट बट द इथॉस इज द सेम. गुड इवनिंग मावी. नहीं, अभी ऑफलाइन कोई क्लासेस नहीं ले रहा हूँ. ऑल माय क्लासेस आर ऑन ऑन अनअकैडमी. नाउ यू नो वन थिंग, मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि अभी हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें ये चीज अभी रेलेवेंट होने वाली है. नाउ यू नो इट एक्सटेंड्स टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. द फर्स्ट पॉइंट कम्स, हैज जुडिशियल प्रोसीडिंग बीन डिफाइंड एनीवेयर? See, the word judicial proceeding has not been defined in Indian Evidence Act. However, judicial proceeding has been defined in CRPC. जब मैं CRPC के सेक्शन 2I में जाता हूं, वहां पे डिफाइंड है कि these are proceedings taken under oath, where evidence is taken under oath. तो जो भी proceedings के अंदर हम जाते हैं, जो oath के अंदर ले रहे हैं, as per the definition given in 2I, when I go to other jurists, I read the definition given by John D. Main. John D. Main, as we all know, is a very important jurist as far as Indian law is concerned. So I would like to quote Main. Main says, any step in the lawful administration of justice in which evidence may be legally recorded for the definitive decision of the matter in issue. मैं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज थी. मैं कोट करना चाहूंगा एक जजमेंट को प्रीवी काउंसिल की, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस गुलाम इस्माइल. इस जजमेंट में कहा गया, जुडिशियल प्रोसीडिंग वो प्रोसीडिंग है, इट इज एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज टेकन अंडर ओथ. सो बेसिकली जो चीज हम 2I में पढ़ते हैं हमारी CRPC में, वही हमारा ये प्रीवी काउंसिल का जजमेंट बोलता है, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस गुलाम इस्माइल. सो बेसिकली प्लीज रिमेंबर what is the meaning of the word judicial proceeding. See, judicial proceeding को अगर हम बड़ा वाइड मीनिंग दें, गुड इवनिंग मान सिंह, अगर हम वाइड मीनिंग दें तो इट विल इंक्लूड एनीथिंग वेयर एविडेंस इज टेकन अंडर ओथ. अब मेरा ये क्वेश्चन उठता है कि एविडेंस तो बहुत जगह लिया जाता है अंडर ओथ, कोर्ट में भी लिया जाता है और ट्रिब्यूनल्स में भी लिया जाता है. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि does Indian Evidence Act apply to tribunals? This question I have seen in the ADJ exams, and now I have seen in one of the South Indian, पता नहीं कौन सा मैं देख रहा था उस दिन पे क्वेश्चन पेपर, एक साउथ इंडियन कोई स्टेट में आया है. That the question is, does Indian Evidence Act apply to tribunals? अब इस चीज में ध्यान रखना है कि हमारे पास जो आंसर है वो इसी बेयर एक्ट में है. जुडिशियल प्रोसीडिंग, यस, हो सकता है ट्रिब्यूनल्स की प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो, बट यहां पे क्या सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग लिखा है कि आगे भी कुछ लिखा है? आगे भी लिखा है. वो क्या लिखा है? इन और बिफोर एनी कोर्ट. नाउ द कोर्ट कम्स इन पिक्चर. व्हाट इज अ कोर्ट? तो कोर्ट वो होता है जहां पे एक डेफिनेटिव जजमेंट दिया जाता है. यस, नाउ से व्हेन आई से इन और बिफोर अ कोर्ट, इन मींस एक बिल्डिंग, बिफोर का मतलब है सी जहां पे पहले जमाने में क्या होता था, जब किंग का जमाना होता था, दैट वेयर एवर द किंग यूज्ड टू होल्ड द कोर्ट इन अ पर्टिकुलर बिल्डिंग. तो अगर कोई स्पेसिफाइड बिल्डिंग है कोर्ट, उसके अंदर इन होता है. और आज के दिन में कोर्ट जहां भी जज बैठ जाए वहां कोर्ट होता है. सो दैट इज व्हाई द वर्ड इज इन और बिफोर. इन अ बिल्डिंग एंड बिफोर अ जज वेयर एवर ही सिट्स, दैट टेक्स it becomes a deemed court. Now the question, the million dollar question is that what will fall in a court. चलिए, इसके लिए I would like to go to certain judgments.
Because as I said, this question has come in many exams. तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि कोर्ट कहीं डिफाइंड है क्या? यस, एम के मालिक, ओपन कोर्ट हो सकता है। सी आज के दिन में कई बार क्या होता है, आई टेल यू वन, आई गिव यू वन एग्जांपल। कई बार क्या होता है, टेररिस्ट होते हैं, वो जेल में होते हैं, तो कोर्ट जेल में लगती है, तो क्या जेल कोर्ट हो गया? यस। सो प्लीज रिमेंबर, आज का मॉडर्न डे कंसेप्ट क्या है कोर्ट का? ए बिल्डिंग, जैसे हमारा कोर्ट का परिसर होता है, वो तो कोर्ट हो गया। बट आज के दिन में जहां पे भी कोर्ट कोई जज लगाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहीं भी बैठता है। यस, इंदिरा गांधी वाले केस में ऐसा हुआ था। सो दैट इज वेयर व्हाई इट इज कॉल्ड इन और बिफोर अ कोर्ट। ओके, नाउ नाउ यू नो द क्वेश्चन अराइजेस, क्या हमारे पास कोई डेफिनेशन है? और प्लीज रिमेंबर, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। डिफाइन अ कोर्ट। Okay. So when I say define a court, I would like to quote the Supreme Court on this. I would like to quote a very important judgment, which is Brij Nandan Sinha versus Jyoti Narayan. ये एक लैंडमार्क जजमेंट है इसके ऊपर, और ये जरूर कोट करना है जब भी ये क्वेश्चन आए। कोर्ट क्या होता है? ब्रिज नंदन सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण, 1956 सुप्रीम कोर्ट। इसमें आई वुड लाइक टू जस्ट कोट द जजमेंट। कोर्ट इज अ बॉडी और फोरम which must have a power to give a decision or definitive judgment, which has finality and authoritativeness, which are essential tests of a judicial pronouncement if it has to be treated as a court. How to prepare evidence? Do the five. महाजबीन, बेटा आपको जस्ट अटेंड माय ओवरव्यू लेक्चर्स। पहले बेसिक समझो। अगर आपको बेसिक समझ नहीं आएंगे तो एविडेंस एक्ट बीच में से करना तो फिर सारे एलएलबी स्टाइल करते हैं। इफ यू वांट टू मास्टर एविडेंस एक्ट, प्लीज गो टू द ओवरव्यूज। तो जितने मेरे ओवरव्यूज हैं सबको करो, अटेंड देम। मेरे यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, किसी में जाके आप पढ़ लो, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। पर हमेशा बेसिक से चलो, गो फ्रॉम द वेरी कंसेप्ट, तब तब मास्टरी होती है कोई भी लॉ। ओके, नाउ व्हेन आई सी, नाउ ये जो हमने अभी डिस्कस किया, कोर्ट क्या होता है? कोर्ट इज अ बॉडी और फोरम विच हैज अ पावर टू गिव अ डिसीजन और definitive judgment. Definitive judgment which has the finality and authoritativeness. जो definitive हो, final हो, authoritative हो, उसको कोर्ट कहेंगे। नाउ अब ये क्वेश्चन उठता है कि कहीं और भी ऐसा कुछ लिखा है? यस, व्हेन आई गो टू द डेफिनेशन ऑफ अ जज इन सेक्शन 19 आईपीसी, ऑलमोस्ट यही चीज वहां लिखी गई है। जज कौन होता है? जो एक डेफिनेटिव जजमेंट देता है। अब नेचुरली मेरा अगला क्वेश्चन आप सबके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर फिर ट्रिब्यूनल क्या है, या फिर ट्रिब्यूनल कोर्ट क्यों नहीं है? क्यों ये कहा जाता है कि ऑल कोर्ट्स आर ट्रिब्यूनल्स बट ऑल ट्रिब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट्स? ये बहुत कॉमनली बात कही जाती है। इसके लिए आई वुड जस्ट क्विकली टेल यू, आई वुड लाइक टू कोट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जहां पे ये डिफरेंस दिया गया है। प्लीज ये जजमेंट नोट कर लो, कभी भी प्रॉब्लम आए इस जजमेंट में चले जाना। इस जजमेंट का नाम है एस डी जोशी वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे, वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे। 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें इन्होंने क्लियर किया, यू कैन रीड द जजमेंट लेटर ऑन, मैं सिर्फ एक इसके एक्सर्प्ट दे रहा हूं। जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो नॉर्मली, हमारे ट्रिब्यूनल्स एक पर्पस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली बनाए जाते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, हमारे ट्रिब्यूनल्स एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई मामला होता है जिसको स्पेसिफिकली डील करने के लिए स्टेट बनाती है। कोर्ट जो होते हैं वो सारे मैटर्स को डील करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मोहम्मद शमसाद, एस डी जोशी वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे, 2011 सुप्रीम कोर्ट। तो मैं इसी इसी जजमेंट से दो लाइन पढ़ूंगा बस। इट सेज दैट with the growth of civilization,
a number of administrative tribunals have come into existence. These have the authority of law to pronounce upon valuable rights. They act in a judicial manner, sometimes even take evidence on oath. But they are not courts. They are brought into existence to implement some administrative policy. इनको सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को कवर करने के लिए, यानी कि मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल्स डील विद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. एक चीज और मैं यहां बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा. जब हम अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं, तो हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने दो आर्टिकल इंट्रोड्यूस किए, आर्टिकल 323A एंड 323B. तो हमारे, प्लीज रिमेंबर, पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में लिखा गया था, ट्रिब्यूनल्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. However, now it is a part of our constitution by virtue of Article 323A, which deals purely with administrative tribunals. और दूसरे 323B जो अदर मैटर्स कौन से ट्रिब्यूनल हो सकते हैं? टैक्सेशन के ट्रिब्यूनल, फॉरेन एक्सचेंज के ट्रिब्यूनल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रिब्यूनल्स, इंडस्ट्रियल लेबर के ट्रिब्यूनल्स, लैंड रिफॉर्म के ट्रिब्यूनल्स, ये सारे 323B में आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. सो आई होप यू आर, अब फटाफट हम देख लें फर्क क्या है. फर्क क्या है? You know, when I go to what is the difference between a tribunal and a court, let us quickly have a bird's eye view of the differences between the two. See, firstly, please remember, tribunals are dealing with specific matters, mostly on administrative law. Courts deal with all types of cases. First difference. Second, tribunal sometimes may be a party to the dispute. Court can never be a party to the dispute. Third, tribunals basically settle controversies only regarding certain special matters which have been laid down by administrative law, whereas court administers justice in all matters. Then, the decision of a tribunal is called an award. The decision of a court is a judgment. Then, tribunals are specifically dealing with only specific matters. Courts deal with all types of matters. Then, court is presided by a judge, whereas the tribunals are headed by chairmen and other members who are appointed or elected by the state, by the executive. Now, because tribunals are quasi-judicial bodies, that is the reason why we do not have specific codes. तो ट्रिब्यूनल कैसे चलते हैं? उनके कोड्स नहीं लगते उनके ऊपर, तो एविडेंस एक्ट भी नहीं लगता उनके ऊपर. तो वो कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. सही क्या है वो फॉलो करते हैं. सो प्लीज रिमेंबर, ट्रिब्यूनल्स नॉर्मली गो बाय not by the established procedures. Courts have to follow established procedures. Courts follow करेंगे CPC, CRPC, एविडेंस एक्ट. ट्रिब्यूनल नहीं करेगा. मैंने बोला ना, कई बार तो ट्रिब्यूनल खुद भी पार्टी बन जाता है. इसीलिए हम कैसे, बट दे आर गिविंग अवार्ड्स. दिमाग यूज कर रहे हैं, जुडिशियल अपना दिमाग यूज करके तब दे रहे हैं अपना अवार्ड. इसीलिए हम उनको क्वासाई जुडिशियल बॉडीज कहते हैं. I hope everybody is clear about this basic difference कि हमारा एक ट्रिब्यूनल और एक कोर्ट में क्या फर्क होता है. I hope सबको समझ आ गया होगा. Yes, basically MK Malik, it actually is dealing with certain matters which are specific in nature. जैसे for example, कोई एक, जैसे हम टैक्सेशन का मामला ले रहे हैं, तो वो सिर्फ, तो बेसिकली एज आई टोल्ड यू, SD जोशी में बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एक स्पेसिफिक मामलों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसाइड किया जाता है, एक ट्रिब्यूनल इनको डील करेगा. दैट इज हाउ वी रीड इट. नाउ यू नो, सो द फर्स्ट थिंग वाज इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. ये हो गया इसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन. बट जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वेयर
only in or before a court. In other words, whatever does not fall within the definition of a court, वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करेगा. डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कोर्ट नहीं है, एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करेगा. सो याद रखना है कि जो कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आता, वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगेगा. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बहुत बार आया हुआ है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, कहां सेकंड और कहां अप्लाई करता है. प्लीज रिमेंबर इट अप्लाइज टू कोर्ट्स मार्शल्स. नाउ वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर, हमारे कोर्ट मार्शल्स कहां होते हैं. तीन हमारे विंग्स हैं डिफेंस के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी. अब क्या हुआ था कि तीनों के अपने अपने एक्ट्स हैं, अपने अपने एक्ट्स थे. ब्रिटेन ने 3 एक्ट्स निकाले थे जब ब्रिटिश रूल था यहाँ पे. एक था हमारा आर्मी एक्ट 1881, दूसरा था हमारा नेवी एक्ट जो 1934 का था, और तीसरा था हमारा एयरफोर्स एक्ट 1917 का. ये तीनों के तीनों रिपील कर दिए गए. ये तीनों एक्ट्स रिपील हो गए. क्यों? हमने अपने इंडिपेंडेंस के बाद नए एक्ट बनाए. हमारा ये रिपील कहां से हमने किए थे. देयर इज अ ब्रिटिश स्टैट्यूट्स रिपीलिंग एक्ट. 1960 का हमारा ब्रिटिश स्टैट्यूट्स रिपीलिंग एक्ट है. तो हमने बहुत सारे ब्रिटिश स्टैट्यूट्स को रिपील कर दिया. एज अ रिजल्ट अब क्या हुआ, हमारे जो नए लॉ बने, आर्मी एक्ट बना 1950 का, एयरफोर्स एक्ट बना 1950 का, और नेवी एक्ट बना 1957 का. अब ये तीनों एक्ट्स हैं जो आज के दिन में गवर्न करते हैं. अगर इनमें कोई ट्रायल चलता है, सपोज एनी आर्मी पर्सनल और एयरफोर्स पर्सनल और नेवी का कोई पर्सनल कोई कोई ऑफेंस करता है, अब उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल चल रहा है, तो प्लीज रिमेंबर उसमें सजा तो बहुत होती है. इसीलिए इंडियन एविडेंस एक्ट इन तीनों लॉज में एप्लीकेबल है. इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द थ्री. सो प्लीज रिमेंबर, हमारे आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में सेक्शन 133 ऑफ आर्मी एक्ट applies evidence act to army act. Section 132 of air force act applies Indian evidence act to air force act, and section 130 of navy act applies Indian Evidence Act to all courts martials. So इसका मतलब है कोई भी कोर्ट मार्शल चल रहा होगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन राइट से कंसर्न है, उसमें सजाएं होती हैं, वो खतरनाक सजाएं होती हैं. इसीलिए हम वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई करेंगे. अब यहाँ पे आप देखो जो लिखा है, अदर देन कोर्ट्स मार्शल कन्वीन्ड अंडर आर्मी एक्ट 44-45 विक्टोरिया, नेवल डिसिप्लिन एक्ट 29 एंड 30 विक्टोरिया, एंड इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934, ये तो रिपील हो चुके हैं. इसीलिए अदर देन इसको आप बिल्कुल निकाल दो. 185th लॉ कमीशन ने कहा था कि ये सुपरफ्लुअस है, इसको डिलीट क्यों नहीं कर देते. अभी क्योंकि अमेंडमेंट नहीं हुआ इंडियन एविडेंस एक्ट में, ये कायदे से हम इसको नजरअंदाज कर सकते हैं. वी कैन इग्नोर दीज, बिकॉज ऑल दीज एक्ट जो ये अदर देन कोर्ट मार्शल्स लिखे हैं, ये सारे के सारे रिडंडेंट हो चुके हैं. ऑल ऑफ ये, जैसा कि मैंने बोला, आप ये तीनों लॉज कौन से थे. ये थे आर्मी एक्ट 1881, इंडियन नेवी एक्ट 1934, और जो हमारा एयरफोर्स एक्ट 1917. ये तीनों रिपील हो चुके हैं. उनके जो प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं, ऑटोमेटिकली वो भी रिपील हो चुके हैं. सो प्लीज इग्नोर दिस एस्पेक्ट. सो टू टू अभी टू सम अप, हम वेयर डज इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई. A, it applies to all judicial proceedings, not everywhere. There may be judicial proceedings in a tribunal. It does not apply because specifically it applies to in or before a court. That's first thing. Second, it applies to all court martials in the new laws, which means Army Act 1950, Air Force Act 1950, and Navy Act 1957. स्पेसिफिकली सेक्शंस हैं इन लॉज के जो इंडियन एविडेंस एक्ट को अप्लाई भी करते हैं. जो आगे लिखा है ब्रैकेट्स में, अदर देन दिस, ये पुराने लॉज को रेफर करते हैं जो ऑलरेडी इंडिया में रिपील हो चुके हैं. सो आज अगर इनको बिल्कुल हम ब्लैकआउट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आई होप एवरीबॉडी इज नाउ क्लियर ऑन ऑल दीज मैटर्स. नाउ
आई थिंक टाइम इज अप नाउ. आई टेक एनी क्वेश्चंस. अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, हम उनको लेते हैं. अगली बार मैं लूंगा किस पे अप्लाई नहीं करता, आर्बिट्रेशन पे और हमारा एफिडेविट्स पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करता. इनका लॉ क्या है? नेक्स्ट वेडनेसडे हम यहाँ से शुरू करके then we will go on to the definitions of Indian Evidence Act. Is everybody clear about today's lecture, please? Are there any doubts? Okay. So I guess the lecture is clear to everybody. Oh, thank you, Gaurav. Thank you. Yes. Now, this is a very important thing. You know, this question is coming in mains. आजकल मैंने देखा एग्जाम्स में आना शुरू हो गया. So let us be very clear about this. Thank you all. God bless you. We'll take it up from here. In my next lecture, हम यहीं से शुरू करेंगे. I will complete section 1 in my next lecture and then we'll go on to the definitions which are very very important. अगर हमें इंडियन एविडेंस एक्ट समझना है तो हमें पहले डेफिनेशंस की मास्टरी करनी है. हर डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा छुपा हुआ है. which we will see. शिवम, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी क्या होती है. देखो, एडमिसिबिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज को हम कोर्ट का रिकॉर्ड बनाएं. सो व्हेनेवर आई मेक आई राइट अ जजमेंट, तो मैं कौन सी चीजों को लूंगा जजमेंट में? जो मेरा कोर्ट का रिकॉर्ड है, जो मेरी कोर्ट की फाइल है. क्वेश्चन ये उठता है कि एडमिसिबिलिटी का मतलब हो गया कौन सी चीज मैं कोर्ट में अलाउ करूं, कौन सा चीज मैं कोर्ट का रिकॉर्ड में अलाउ करूंगा. अब सिर्फ रेलेवेंट चीजें अलाउ हो सकती हैं. अब कौन सी रेलेवेंसी? सिर्फ जो हमें इंडियन एविडेंस एक्ट अलाउ करता है. सो इन अदर वर्ड्स, वो फैक्ट्स जो इंडियन एविडेंस एक्ट अलाउ करता है वो रेलेवेंट है. सिर्फ रेलेवेंट चीजें ही एडमिसिबल हैं. तो कौन सी रेलेवेंसी हो गई? जो इंडियन एविडेंस एक्ट अलाउ करता है, यानी कि लीगल रेलेवेंसी. सो व्हाट थिंग्स आर एडमिसिबल? जो इंडियन एविडेंस एक्ट अलाउ करता है. याद रखना, दो तरह की रेलेवेंसी होती है, एक लॉजिक पे और एक जो लॉ अलाउ कर रहा है. इंडियन एविडेंस एक्ट किसको अलाउ करता है? सिर्फ जो वो अलाउ कर रहा है. इस चीज पे मेरा पिछले लेक्चर पे चले जाना. ये चीज मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है. थैंक यू एवरीबॉडी. गॉड ब्लेस यू ऑल. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक Wednesday at 5:30 p.m. Bye bye. God bless.